can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. Welcome back to Football Bloody Hell and welcome to another episode of The Good, The Bad and The Ugly and finally मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जहाँ पे मैं एक विक्ट्री की बात कर सकता हूँ और जैसे कि मैंने कहा मैनचेस्टर यूनाइटेड विंस अगेंस्ट बर्नली 0-1. The best way I can describe this performance is steady. काफ़ी लोग इसे बोरिंग कहेंगे, काफ़ी लोग इसे बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस कहेंगे, काफ़ी लोग कहेंगे कि बहुत ही फ्लैट था, बट मेरे हिसाब से ये स्टेडी परफॉर्मेंस था और इसी स्टेडी परफॉर्मेंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. We have tried our best to be all aggressive and high tempo in the previous games to start the games, but एक रीज़न या दूसरे रीज़न की वजह से वो हमारे अगेंस्ट ही गया है. So I'm very happy with this performance. I'm very content with this performance. Not happy but content. और यार इस गेम में ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए, बहुत ही कम टॉकिंग पॉइंट्स हैं और जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं उसे अभी हम हिट करने वाले हैं, स्टार्टिंग विथ द वन पॉजिटिव विच इज सो सरप्राइजिंग एंड सो रिफ्रेशिंग दैट इट एक्चुअली ब्रिंग्स अ स्माइल टू माय फेस. जॉनी एवंस, जॉनी एवंस भाई, चलो और कुछ नहीं तो वो कम से कम उसने ये तो प्रूव कर लिया कि वो बर्नलीज और लूटन्स और मे बी फॉरेस्ट इन टीम्स के अगेंस्ट कुछ हमें कंट्रीब्यूट कर सकता है. और कुछ तो मैं बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ उसकी परफॉर्मेंस को बोल के, बिकॉज dude, he had a fantastic game and I'm so it would have been so good अगर उसका वो गोल वार डिसअलाउ नहीं करता and it would have genuinely felt good. The man had 81 touches in the game. He won all his duels, 2 ground, 2 aerial, 91% pass accuracy. And talking about passes, boss, what a sublime pass to Bruno Fernandes for that goal. It was good to see him. It honestly, वो तुम्हें यार एक नॉस्टैल्जिया की भी फीलिंग आती है और ऐसे डेड रबर गेम्स में जहाँ पे मतलब बहुत ही फ्लैट परफॉर्मेंस हो सकती थी, किसी के बारे में अच्छे पॉजिटिव्स बोलना बहुत अच्छा लगा, एंड स्पेशली जॉनी एवंस. सो जॉनी एवंस डेफिनेटली माय पर्सनल मैन ऑफ द मैच. उसके अलावा जस्ट वेरी क्विक शाउट आउट टू ब्रूनो फर्नांडिस टू स्कोर दैट माइंड ब्लोइंगली वर्ल्ड क्लास गोल. भाई, दैट वॉली, दैट टेक्निक इज नॉट फॉर एनी टॉम डिक एंड हैरी. कोई बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही है वो गोल मार सकता है. एंड thankfully we have a few who create that magic moment from time to time. Overall Bruno का गेम इतना influential नहीं था, just like any other player on the pitch. सबने बहुत ही similar तरीके से खेला, but the captain delivered when it mattered, boss, and at the end of the day that is what we need, and hopefully this is a sign for growing confidence. इसके अलावा the second positive that I would really want to talk about is we actually kept a clean sheet. Andre Onana, definitely, I think it was needed यार for him, especially after the howler against Bayern. बहुत ही ज़रूरी था उसके लिए एक nothing exceptional again, but एक काफ़ी clean performance निकालना, clean sheet, no pun intended there, but yeah, I think it was a very steady performance. जैसे कि मैंने कहा कि the emphasis on this game was to make sure that nothing goes in, and we try to keep it very strong in the back line. हमने काफ़ी बहुत ही sensibly इस गेम में डिफेंड किया, हमने ज़्यादा एडवेंचर नहीं दिखाया अटैक करते टाइम, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्लीन शीट इज समथिंग दैट वो कहते हैं ना, हम ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इस गेम के लिए, बिकॉज you guys all know we've been conceding so many goals. If I'm not mistaken, we've already conceded like 14 goals, which is ridiculous क्योंकि हमने अभी तक खाली 6 ही गेम खेले. So clearly that is an issue for us. और at the end of the day ऐसा लगा कि हमने बहुत ही back to basis type performance किया है, and what mattered is the one goal, and what mattered is not conceding any and getting the 3 points. Besides this, अगर मैं bad aspects की भी बात करना चाहूँगा तो फिर the one thing which is quite clear and obvious is that our midfield at the end of the day अभी तक वो इस पोजीशन में नहीं पहुंच पाया जहाँ की वो गेम्स को डोमिनेट कर सके, जहाँ की वो गेम्स को कंट्रोल कर सके. इसके बहुत फैक्टर्स हैं एट द मोमेंट दैट की इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्ली द इंजरीज, जिसकी वजह से अभी तक हमने एक स्टेडी पार्टनरशिप नहीं बिल्ड की है कैसमेरो के अराउंड. और
Yeah, I think when now the fact that Sofian Amrabat had his debut in this game, along with that Mason Mount वापस आ रहा है, तो अब मैं अगले 2-3 गेम में अगर देखूंगा तो हमारा मिडफील्ड एक्चुअली काफी स्ट्रांग लग रहा है in terms of the numbers. Imagine a midfield of Casemiro, Mason Mount, Sofian Amrabat, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Meno is returning, Scott McTominay is of course there. तो एटलीस्ट इवन नंबर एंड क्वालिटी वाइज दिस इज समथिंग दैट हम आगे जाके एड्रेस कर लेंगे एंड we hopefully now that we are getting certain players back, this one key aspect which is completely so far derailing our entire season, ये शायद हम इसे अच्छी तरह से we can progress with it. इसके अलावा यार जैसे कि मैंने कहा कि ये गेम में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है टू टॉक अबाउट. इट वाज अ वेरी बेसिक गेम वी प्लेड. दे हैड मोर पोजेशन. हमने बहुत ही क्लियरली उनको पोजेशन दे दिया था. वी वर वेरी कंफर्टेबल स्टेइंग बैक एंड जस्ट गेम जस्ट वेंट एंड थैंकफुली इट फिनिश्ड आवर वे. और इंस्टेड ऑफ द अगली एस्पेक्ट जो कि मैं यूजुअली करता हूँ, इस बार मैं एक बहुत ही की एस्पेक्ट जो मेरे हिसाब से मैंने ऑब्जर्व किया इस गेम में, आई वांट टू डिस्कस इज दैट in order to move forward, I think Erik Ten Hag decided to take a few steps back. By this, I mean something which is very simple. हमने लास्ट अपने जो 3 गेम्स देखे, हमारा स्टार्ट बहुत ही अग्रेसिव हाई टेम्पो रहा. We tried to go up against the opponents. हमने ट्राई किया उनको हाई प्रेस करके बॉल उनसे छीन के वहीं पे create attacking positions. In this game, it was completely the opposite. इस गेम में हमने हमारा फुल कंसंट्रेशन किया कि हमारा बैकलाइन और मिडफील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड रहे. We stuck to the basics. Imagine no one thought that Johnny Evans, Lindelof, Dalot, along with Sergio Reguilon will be our defensive line by the 6th game of the season. So I think there were quite like it was very genuine and very earnest tactical change from the manager. उसने ये चाहा कि if you notice in terms of the midfield options of the players that we selected, वो काफ़ी similar था from our last game जहाँ पे हमने Brighton के against Diamond use किया था. But having said that, the tactics were much different. We were very comfortable and we were okay with the fact that Burnley is going to have the ball. भाई उनका कुछ 65-70% पोजीशन था फुल गेम में and we generally try to play on the counter attack. This is not, I know that ये इसका perception हो सकता है कि negatively, but I think it's Erik Ten Hag trying to figure out a way to restart and reboot. At the end of the day, आज के जो इस गेम के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा चीज़ important थी, वो थी victory. And we got a clean sheet and we got the 3 points. We can only build on this. We have like the next 6 or 7 games, out of which I think 5 or 6 are playing. We're going to play at Old Trafford. Or till the time we play Manchester City, हमारा हर एक game winnable है. Especially the Premier League, I expect, and I'm being very straightforward with this, I expect us to win all the games. It's because it is doable. और जिस हिसाब से हमने इस सीजन को स्टार्ट किया, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. So this game against Burnley could be a starting point where we have enhanced and like uplifted our confidence. और अगर इस गेम से मुझे और कुछ ना मिले, बस यही मिले कि हमें 3 पॉइंट्स मिले और हमारा टीम का मोरल और कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया है, so that's it. I don't require anything else from this game. I'm very happy with it. इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगा because like I said, the game was pretty straightforward. And let me know guys if you had any other standout moments from this game. तुम्हें ऐसा कुछ लगा कि was worth mentioning or worth talking about negatively या positively. Like I said, we are always here making content and video for you guys. Football bloody hell. Please join the community. Comments में interaction करो यार, like करो, dislike करो. Just put your opinions across and I will see you very soon. Thank you so much.